Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to continue our English syllabus of English grammar and chapter 1. First of all, before starting anything else, I am going to write here something and you have to answer me. Suppose I write here some words like wish you participate I in function this. Children, you can see on the board that I have written some words wish you participate I in function this. Now what can you say? I have just written all the words together. Suppose still they are separated by commas, but I am just writing them like this. You participate I function in this wish. Can you tell me what is this I have written? Many of you would tell, sir, this is a sentence, because it looks like a sentence. So you will tell me, sir, this is a sentence. But can I ask you, does this sentence which you are saying gives a complete sense? You participate I function in this wish. Does it really give a complete sense? No, it does not give any complete sense. So it is just a group of words. It is just a group of words. It is nothing. It is just a group of words. It is not a sentence. But now I am writing it again. I am writing one group of word again. Group of word 2. And you have to watch it very carefully. Now again I am going to write these words in another group. I am going to arrange them in another order. Now look at this. I wish you to participate in this function. I have again grouped these words in another order. First words were in this order, now words are in this order, and these both are group of words. It was a group of words, it is a group of words. Now tell me, does this group of words give you a complete meaning, a meaning? Read it again. I wish you to participate in this function. मैं चाहता हूं कि आप इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करें. Does this really give a meaningful sense? Yes, it does. It gives a meaningful sense, and that's why this group of words can be told as a sentence. So I hope now it is clear that our topic is sentence. So chapter 1, sentence. We will continue with our topic sentence. Okay? So I hope that you have understood
these both are the group of words, but it is not a sentence and this is a sentence. Why? Because this group of word does not give any complete meaning and this group of word gives a complete meaning. So we can say sentence is a group of word that gives a complete meaning, or we can say sentence is a group of word that gives a complete sense. So these are all group of words, but not all the group of words gives complete sense. अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो आप सिर्फ इतना बताएंगे, सर दिस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये सेंटेंस नहीं है, इट इज ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट इज अ सेंटेंस. ये मैंने यहां पर क्या लिखा है, दिस इज अ सेंटेंस. I hope you have understood. Now we will study kinds of sentences. Okay? Now let's understand kinds of sentences. Kinds of sentences. What are kinds of sentences? So first of all we study assertive sentence. असर्टिव सेंटेंस. और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ बच्चों के एक से ज़्यादा नाम होते हैं, उसी तरह से इन सेंटेंसेस के भी एक से ज़्यादा नाम होते हैं. तो दिस इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस, ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. Declarative sentence or assertive sentence, what does they do? What are they? So you can say, sir, a sentence which states something is called assertive sentence or declarative sentence. How? And these sentences show you opinion, means what do you think about something in the world. What are your thoughts about something in the world, about yourself, opinion and facts. And facts, whichever the true things, whichever facts, opinion or facts are known as assertive or declarative sentences. इसमें हम ओपिनियन और फैक्ट्स को जगह देते हैं. हम जब किसी के बारे में बोलेंगे ही इज़ अ गुड बॉय, ये हमारा ओपिनियन है, वो किसी के लिए बैड भी हो सकता है. और अगर हम बोलते हैं लाइक दिस इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये एक फैक्ट है, ये ट्रू है कि हाँ ये इंग्लिश है. तो हम जो कुछ भी बोलते हैं वो या तो सही होता है या हमारा विचार होता है, तो वो या ओपिनियन होता है या फैक्ट होता है. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में वी ऑलवेज शो ओपिनियन एंड फैक्ट्स. They can be, point number 1, point number 2, they can be positive. इसमें आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी मिलेंगे एंड निगेटिव स्टेटमेंट्स भी मिलेंगे. जस्ट लेटर वी विल वॉच सम एग्जाम्पल्स. ओके. नंबर टू we ask questions from someone. So the sentences we use to ask questions from someone are known as interrogative sentences. So it will be, next kind is interrogative sentence. Interrogative sentences are used to ask questions. You can say when we ask questions using a sentence, that is called interrogative sentence. Used to ask questions. Used to ask questions. And you all, I think you all know that how to ask questions, like what is your name, where do you live, and have you done your work, is this your brother. So these are all known as interrogative sentences. Okay. Then we write imperative sentences. Now my dear children, what are imperative sentences? So imperative sentences are the sentences that show any kind of order, like sit here,
any kind of advice like go and study, okay, and any kind of suggestion, any kind of request. So these sentences show order, suggestion, order, suggestion, request. Okay, order, suggestion, request, command, these are. And the basic identification of imperative sentences is, we can say point number 1 and we can say point number 2. These sentences always start with, you can say start with verb. Start with main verb. These sentences always start with main verb. Do it, stop, don't go there. Main verb or don't. मेन वर्ब या डोंट दो तरह से स्टार्ट होते हैं. जब हम पॉजिटिव बोलेंगे तो दे विल स्टार्ट विद मेन वर्ब. जब हम कुछ किसी को मना करते हैं, फॉरबिड करते हैं, तो वहां पे होता है डोंट का यूज करते हैं. और बच्चों डोंट, डू भी एक वर्ब होती है. डू इज अ काइंड ऑफ वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, अंडरस्टूड. एंड अवर नेक्स्ट काइंड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. I hope you are able to see this below here. Okay, exclamatory sentences. Oh my God, what happened this? Wow, what a beautiful scenery it is. Yes, we have won the match. तो अभी मैंने आपके सामने क्या किया, मैंने अपने अंदर से अचानक से फीलिंग निकाली. सपोज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और अचानक से बाहर कुछ ऐसा हो जाता है जो मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगता है, अजीब सा लगता है. ओह व्हाट इज दिस. तो मैं मतलब अपने अंदर से एक वर्ड बोलूँगा जो मेरे मन की अचानक से अराउज हुई फीलिंग को बाहर निकालेगा. तो व्हेन एनी सेंटेंस एक्सप्रेस द सडन फीलिंग, व्हेन एनी सेंटेंस एक्सप्रेस द सडन फीलिंग is called exclamatory sentence. is called exclamatory sentence. तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? पॉइंट नंबर 1, express sudden feeling. Express sudden feeling. और सडन फीलिंग क्या क्या हो सकती है? कोई सरप्राइज हो सकता है, सरप्राइज, और एनी काइंड ऑफ सॉरो. सॉरो मतलब कोई दुख हो सकता है, कोई हैप्पीनेस हो सकती है, कोई खुशी हो सकती है. ठीक है, कोई मिरेकल हो सकता है. तो ये तब हम अपने जो क्या कहते हैं सडन फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, और वी यूज हियर एक्सक्लेमेशन मार्क. वी यूज हियर एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं. assertive sentence, declarative sentence are the sentences that show any kind of opinion, you are not bad, any kind of fact, this is Bindki, this is a school. और पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, दो तरह के होते हैं. और यहां आपको मैं थर्ड पॉइंट लगकर लिखूं मैं यहां पर वी यूज फुल स्टॉप. हम यहां पर फुल स्टॉप का यूज करते हैं एट एंड, लास्ट में जब हमारा सेंटेंस बंद होता है. ठीक है, वहां पर हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं. यहां इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे. इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम फुल स्टॉप को ही यूज करेंगे.
ठीक है।